So let's start with chapter 46. Be careful what you wish for. Hedonic treadmill. तो चैप्टर को समरी से पढ़ के फिर डिटेल में देख लेंगे। तो चैप्टर 46 एक्सप्लेन करता है एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट जो अपने माइंड में, विच इज़ हेडोनिक ट्रेडमिल, विच एक्सप्लोर्स आवर इनएबिलिटी टू करेक्टली प्रेडिक्ट आवर ओन इमोशंस। ओके। हम लोग अपने इमोशंस को करेक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। अ फ्लॉ साइंटिस्ट कॉल अफेक्टिव फोरकास्टिंग। ओके, इसको अफेक्टिव फोरकास्टिंग बोलते हैं। To understand this, imagine you just won $10 million in the lottery. 10 million lottery मिला, you would be ecstatic. But how long would that intense joy last? According to studies on lottery winners by Harvard psychologist Dan Gilbert, the massive happiness boost actually fizzes out after just a few months. Soon after receiving the big check, you would return to being as content or discontent as you were before you won. तो 10 मिलियन का लॉटरी मिला, कुछ टाइम तक आप खुश रहोगे, कुछ महीनों तक, फिर आप soon you will return to the being as content or discontent as you were before you won. ठीक है, वो चीज़ इफेक्ट होगा। कुछ महीने स्टैटिक रहेंगे, उसके बाद फिर वापस से वी विल रिटर्न टू आवर सेम पोजिशन. We naturally overestimate how long or how intensely material things will make us happy. The author shares a story of a banking executive who built a massive dream villa outside the city. After 6 months, his joy completely evaporated, and the mansion felt no different to him than a one-room student apartment. बात तो सही है, ठीक है. बैंकर बिल्ड किया मैंशन बड़ा सा. इवन वर्स, टू लिव इन अ विला, द बैंकर had taken a 1 hour commute twice a day. While we quickly adapt to luxurious material things, we never adapt to the chronic stress of commuting in traffic, meaning the dream house actually had a long term negative effect on his overall happiness. Okay. तो उस ड्रीम हाउस का लॉन्ग टर्म नेगेटिव इफेक्ट आ गया हैप्पीनेस में. इंटेंसली दिस ग्लिच ऑल्सो अप्लाइज टू नेगेटिव इवेंट्स. When a relationship ends or we lose a friend, we are convinced we will never experience joy again. Okay. However, we consistently overestimate the duration of our misery. After a few months, people generally bounce back and adjust to their new reality. बात तो सही है. तो रिलेशनशिप में भी हम लोग को लगता है कभी कभी भी हम लोग रिकवर नहीं करेंगे, बट कुछ महीनों में हम लोग बाउंस बैक कर जाते हैं न्यू रियलिटी में. इसके बाद फिर की लर्निंग्स इस चैप्टर का क्या है? अवॉइड करना चाहिए क्रॉनिक इनएस्केपेबल स्ट्रेसर्स. ओके. क्रॉनिक जो एकदम सेवियर हो या इनस्केपेबल स्ट्रेसर्स को अवॉइड करना चाहिए. स्टेयर क्लियर ऑफ नेगेटिव थिंग्स दैट यू सिंपली कैन नॉट ग्रो अकस्टम टू, सच एज अ लॉन्ग डेली कम्यूट, क्रॉनिक नॉइस और अ कॉन्स्टेंट स्ट्रेस. इन सब से दूर रहो. फिर मटेरियल जो है इज फ्लीटिंग. मतलब क्या है? Understand that you will only experience short-term happiness from material things like cars, big houses, lottery winnings, and bonuses. Prioritize autonomy and passions. Aim for as much free time and autonomy as you can get. Long-lasting positive effects come from what you actively do. So you should follow your passions, even if it means a pay cut, and invest heavily in your friendships. Okay. The long lasting positive effects come from what you actively do, so you should follow your passions even if it means a pay cut, and invest करो heavily relationships में. तो चैप्टर यहाँ से तो बेसिकली 3 की लर्निंग्स क्या है? क्रॉनिक इनस्केपेबल स्ट्रेसर्स को हम लोग को दूर रखना, ठीक है, जैसे कि लॉन्ग डेली कम्यूट, क्रॉनिक नॉइज, कॉन्स्टेंट स्ट्रेस, ये सबको दूर रखना, इससे अकस्टम नहीं होना. फिर मटेरियल जो है स्प्लिटिंग. मटेरियल जो है दूर ये दूर रहने में, शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस से लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस की तरफ जाने में. शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस मटेरियल थिंग्स से हम लोग को मिलता है, तो हम लोग को शॉर्ट टर्म के तरफ नहीं जाना, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस की तरफ जाना. शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस की तरफ केवल नहीं जाना. फिर प्रायोरिटाइज ऑटोनॉमी एंड पैशंस. एम फॉर फ्री टाइम एंड ऑटोनॉमी एज यू कैन गेट. लॉन्ग लास्टिंग पॉजिटिव इफेक्ट्स कम फ्रॉम व्हाट यू एक्टिवली डू, सो यू शुड फॉलो योर पैशंस इवन इट मीन्स अ पे कट, एंड इन्वेस्ट हेविली इन योर फ्रेंडशिप्स. तो ये सब आपको करना चाहिए, ठीक है. थैंक यू. So these are the things. अब यहाँ पे चैप्टर में आते हैं. Suppose one day phone rings, excited voice tells you that you have just scooped the lottery 10 million. How would you feel? And how long would you feel like that? Another scenario, the phone rings and you learn that best friend passed away. Again, how would you feel or how long? In chapter 40, False Prophets, False Illusion, we examine the miserable accuracy of predictions. For example, in the field of political economics and social events, we conclude that self-appointed experts are of no more use than random forecast generators. So moving on. ओके. सेल्फ अपॉइंटेड एक्सपर्ट्स, फोरकास्टर जो नॉर्मल
ऐसी भविष्यवाणी करना उनसे अलग नहीं होता. सो मूविंग ऑन टू न्यू एरा, हाउ वेल कैन वी प्रेडिक्ट आवर फीलिंग्स? Are we experts on ourselves? Would winning the lottery make us happiest people alive for years to come? Harvard psychologist says no. He studied lottery winners and discovered that the happiness effect fizzes out after a few months. Lottery जीतना effect थोड़ा महीना में फिज आउट हो जाता है. So little while after you receive a big check, you will be as content or discontent as you were before. He calls this effect forecasting our inability to correctly predict our own emotions. A friend, a banking executive whose enormous income was beginning to burn a hole in his pocket, decided to build himself a new home away from the city. His dream materialized into a villa with 10 rooms, swimming pool in a view of the lake and mountains for the first week evening, but soon cheerfulness. And 6 months later, he was unhappier than ever. What happened? As we now know, the happiness effect evaporates after the villa was no longer his dream. I came home from work, opened it on nothing. I feel legend about the villa as it was an apartment. To make things worse, the poor guy now faced a 1 hour commute twice a day. This may sound tolerable, but studies show commuting by car represents a major source of discontent and stress, and people hardly get ever used to it. In other words, whoever has no innate affinity for commuting will suffer every day, twice a day. Anyhow, the moral of the story is that dream villa had an overall negative effect on my friend's happiness. Many others fare no better. People who change or progress in their careers are, in terms of happiness, right back where they started after around 3 months. The same goes for people who buy the latest Porsche. Science calls this effect the hedonic treadmill. We work hard, advance, and we are able to afford more and nicer things, and yet this doesn't make us any happier. So, how do negative events affect us? Perhaps a spinal cord injury or the loss of a friend. Here, we also overestimate the duration and intensity of our future emotions. For example, when the relationship ends, it feels like we will never be same. तो रिलेशनशिप वाला एग्जांपल आ गया जो नीचे देखे थे. The afflicted are completely convinced that they will never again experience joy, but after 3 or so months they are back to being dating scene. यहाँ पॉर्स का एग्जांपल था. पॉर्स से भी शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस आएगा. ये रिलेशनशिप वाला हो गया. Wouldn't it be nice if you know exactly how happy a new car, career, or relationship would make us? Well, this is doable in part. Use this scientifically rubbed stamp pointers to make better decision. क्या क्या है देखो. Avoid negative things that you cannot grow accustomed to, such as commuting, noise, or chronic stress. इन सबसे दूर रहो. Expect only short-term happiness from materials such as cars, lottery, bonus prizes. Aim for as much as free time as what positive effects actively do. Follow your passion even if you must forfeit a portion of your income from them. Invest in friendship. For most people, professional status achieve long-lasting happiness as long as they don't change peer groups at the same time. In other words, if you are sent to CFO role and patronize only with other executives, the effects fizzes out. ठीक है. केवल CFO रोल ले लिया और दूसरे लोगों से नहीं मिल रहा. मतलब CFO CEO ही लोगों से मिल रहा. CEO रोल ले लिया एंड आप यू आर मीटिंग ओनली CEO पीपल, तो वो इफेक्ट फिर फिज आउट हो जाएगा. तो ये सब चीज़ है. तो अवॉइड नेगेटिव थिंग्स, एक्सपेक्ट ओनली शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस. मटेरियल थिंग्स इक्वल शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस आएगा. Aim for as much as free time autonomy as possible, since long-lasting effect, objectively to follow your passions even you must forfeit a long-lasting happiness along to change peer groups. In other words, CFO रोल ये हो जाएगा. ठीक है. तो नेगेटिव थिंग्स को अवॉइड करो, शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस से दूर रहो, और एम फॉर मच फ्री टाइम एंड ऑटोनॉमी, लॉन्ग लास्टिंग. ठीक है. लॉन्ग लास्टिंग पॉजिटिव जनरली कम हो, व्हाट यू एक्टिवली डू. तो उन सब चीज़ को करो. CEO इफेक्ट का एग्जाम्पल था. ये रहा 3 चीज़ें. क्रॉनिक इनस्केपेबल एरर से दूर हो, मटेरियल जो है स्प्लिटिंग, प्रायोरिटाइज ऑटोनॉमी एंड पैशंस. तो थैंक यू. ये चैप्टर ओवर.